Within 1 minute, I'm making it ready. One class was there up to 11. That's why I'm little delayed. Yes. Just a few seconds. I'm making it ready. Okay, sir. It is moving from one place to another. I hope. Yes. Now you can ask. सर कर्नल कमांड लाइन क्या होता है? कर्नल कमांड लाइन कर्नल कमांड लाइन मतलब कहाँ पर लिखा है, थोड़ा बोल पाओगे? सर कई तो आर्टिकल में देखा था वो क्या वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस होता है उसमें कुछ. Oh, that is sudo. When you give a sudo, then you are getting the or su. There is a su command and there is a sudo command by which you can get the administrative super user permission. And through super user permission, you can do this. That is called as a su. Like वो भी होगा वो like here you can see, if I put su, then he is asking for password. So if I give it, now he is saying, see, root to this. Are you getting my point? Previously it was showing me this AMULOIA as the user. Now it is showing me the root. Means now I have a root permission. Means he will not ask me anything even if I'll delete or any kind of stuffs. सर तो इसका वो लेवल 0 में है. Level 0. There is a ring 0, ring 1, ring 2, ring 3. ऐसे security को divide कहता है. So now you are in the level. Okay, sir. Okay. So to make it exit, again you put the exit, you will come out. You will come back to this. Or here what you do, there is another option to sudo also. When you give a sudo, it is also giving you the super user permission. Okay, sir. That's why when you install, actually it is a apt-get update. Let's take I'm using. So when I'm using, sometimes suppose I'll install it. If I don't have a super user, then it will ask me, you have to give a sudo. Could not open the file this because he is saying permission denied. But the moment you give a sudo, means he is asking a super user. Okay, that is the way. Okay, sir. I give this, then it will ask for permission, sudo permission for this. Okay, that's all. Okay, sir, please update the video recording links. Yeah. आज मिल जाएगा आज. Okay, sir. इसको बंद कर देते हैं. हमारा कहाँ है? This home marks this G3
G3, this one. Yesterday's any doubt in this previous example? Anybody? The last class, whatever you have done. This one, Max, is it okay for all of you? Hello, please answer so that I can tell in a different manner. Is it okay? What are the steps you are doing then? Check and then try to first you have to add check and the then state. First you have to check the state. If state is fine, then only you can receive a request. But after receiving the request, you have to do again 3 steps. First step is eligibility checking, then temporary modification, then again verify whether you are in safe or not. So 3 things basically you are doing. So if any in the deadlock avoidance, in deadlock avoidance, if any data is coming, the first thing is you have to check the substate should be checked. Should be checked. If it is safe, if first condition, if it is safe, then you go for the next step. What? Then you make a eligibility criteria. Yes. Then you make a temporary modification. After that, again you check the state. The state. If this state becomes safe, then allow. Means allocate the resource. Allocate the resource. Otherwise, don't allocate. Yes, this is the step. So first you check this, then eligibility, then this. So we'll go for today a few things. So as I told, this avoidance can be done through 2 ways. One is a single instance and it is a multiple instance resource. Single instance matlab kya hai? Every resource has only one unit. Multiple instance mein a resource may have more than 1 unit. So if it is a single instance resource, then you have to go for resource allocation graph. So how you can apply the resource allocation graph? Today's class, first we will study. So the resource allocation graph for deadlock avoidance. Resource allocation graph for deadlock avoidance. Yes, how we can do this. So what you have to basically do it. So this is meant for single instance resource. Resource. So this resource allocation graph G has 2 parts, again the same. There is a V and there is a E. So what is this V here? This V is basically consist of all the processes and resources. Ko yaad hoga. Then what is E here? E is little different. If you have remember previously, your E consists of only request and assign edges. But now it has 3 kinds of edges. One is called as the claim edge. One is called as the request edge. And another one is the assign edge. Yes. So what is this? Claim edge, request and assign. Assign we know, but how it is defined. If PI is claiming, this is called as a claim for RI. What does it mean? It may request for this resource later. May request for this resource in the future. In the future means अभी तक request उसका नहीं आया है. So you have to relate with the previous one.
Can anybody tell me what is this claim as per the previous example is concerned? बाद में वो रिक्वेस्ट दे सकता है, उसके लिए बोल पाओगे ए रिलेटेड टू क्या होगा? और पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आप बोलोगे. देयर इज ए रिक्वेस्ट देन. सर वो होगा ये रिक्वायर्ड लेटर वाला. रिक्वायर्ड लेटर कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे थे हम लोग? कितना वेरिएबल यूज कर रहे थे? मैक्स, allocation, सर नीड. very nice, very nice, perfect. इनिशियली allocate नहीं होगा तो नीड कितना हो सकता है? If there is no allocation, what is the needs value? Max. Very मैक्स nice. जो उसका Very nice. रिक्वेस्ट Means at the very beginning, every request, initial request or the demand will be become a claim edge or not. ठीक है नहीं? अगर पहले जब लोन जब सैंक्शन हुआ, अभी तक पैसा नहीं मिला है, then all amount is now claim or not. सपोज आप 10 रुपया के लिए लोन बैंक में अप्लाई किए थे, आपका सैंक्शन हुआ है, पैसा नहीं मिला है. He has sanctioned for the 10 rupees loan. Means अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है, मतलब whole 10 rupees become claim here. Okay? Then there is a request. The request means already he has made a request. Already the process has made a request. I'll tell you what it is. Has made a request. Then third one, that is PI with RI. So this is called as assignments. Means PI holds RI. So in this case, this is your assign, this is your request, and this is the claim. So these are the three basic things. Now let's take a small example how we can identify these three things properly. And what is this avoidance rule says that. He's saying if there is a P0 and this is a P1 and this is a R1 and this is R2. As per the graph is concerned, the graph V consists of all processes as well as resources. Means this P0, R1, R2, everything become a node for this graph. Then what are the edges will be? Edges are of three types, either claimants, requests, and what the assignments. Now if you can look for this example, if you can go for P1, P2, and this R1 and R2 are the two resources. What is the max he need? He need one R1, one R2, and what is he needs also? One R1 and one R2. So this is my max. मैं relate करके previously लिख रहा हूँ. Every resources, what is the max is saying? Maximum number of resources of each type required by the processes. Means P1 needs one from R1 resource, one from R2 resource, and P2 also need one from R1 resource and one from R2 resource. Okay. Then what is the allocation currently? The allocation is also what? Blank. R1 में कुछ भी allocate नहीं हुआ है and R2 में भी कुछ भी allocate नहीं हुआ है. What is the need then? The need is basically you can say that is R1 and R2, which is 1, 1, 1, 1. Correct or not? 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1, and this is also 1, 1. Then what is my availability? The availability is R1 and R2 become 1 and 1. समझ पाए? Yes. Now you will design first how the graph look like. Everybody is clear what is the meaning of this? P1 and P2 दो रिसोर्स चाह रहे हैं, R1 से एक, R2 से एक. अभी तक कुछ भी रिसोर्स उन लोग को नहीं मिला है, and that's why the need is still 1, 1. And this availability मतलब सिस्टम के पास एक R1 का टाइप का रिसोर्स है, एक R2 टाइप का रिसोर्स है. Okay. Then what he is saying? Suppose somebody is, what is the current stage? The current stage is P1 is claiming for R1. P0 is also claiming for R1. P1 is claiming for R1.
P1 is claiming for R2. Correct or not? At this stage, is this data match with this diagram or not? All are claiming. Means अभी तक need इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है. So चारों need पे है कि नहीं? Is there any cycle exist? No cycle exist. Okay? Means he is saying, as per the deadlock avoidance algorithm, if your resource allocation graph, RAG, resource allocation graph, has a cycle, then there is a chances of maybe deadlock. Means we have to avoid this side. If it has no cycle, then no deadlock. Same scenario. And if you can look into it, there is no question of a cycle exist, means currently I am in the safe state. Now what he demands, suppose P1 demanding for R1. आप दे पाओगे कि नहीं? अगर कोई बोलता है, so आप दे पाओगे. क्यों दे पाओगे? कोई बोल पाएंगे? Why it can be allocated? P1 is requesting for R1. अभी दे पाओगे कि नहीं? As per the rule. Anybody? P1 is requesting for R1. Can you give it or not? Yes, sir, we can give. Yes. Why? Because nobody has taken it. If I give here 1 here, इसको अगर मैं 1 दे देता हूँ, 1 resource अगर इसको दे देता हूँ, still I am in the safe state. How it is coming? Just see. If one, now you are currently in the safe, how you are safe? Just see. Who will be executed first? Sir, 1 इससे कम या सेम है, मतलब वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा. बचेगा कितना? 1 plus 0 0 again 1 सर AB 1 is less than this. सर AB हो पाएगा. Then it is become again 0 0 added and the result will be become 1 Means currently you are in the safe. Now what is demand? Somebody is requesting for a resource. Who is requesting? P1 एक टाइप का R1 resource को मांग रहा है. So what you can do? If P1 is requesting for the R1 resources, let's check whether you can give it or not. Rule क्या था? Eligibility. Eligibility क्या होना चाहिए? P1 का R1 need से कम या सेम होना चाहिए. सर कम में सेम है. Because P1 R1 एक मांग रहा है, यहाँ पर एक है. And availability भी एक है. मतलब eligibility criteria satisfy कर रहा है. अगर eligibility criteria satisfy कर लिया, what is our next step? The next step is becoming टेम्पररी मॉडिफिकेशन. सो टेम्पररी मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? कोई बोल पाएंगे? मैक्स में क्या होगा, एलोकेशन में क्या होगा एंड नीड पे क्या होगा? कोई बोल पाओगे? सेम होगा. मैक्स में सेम होगा. वेरी नाइस. ऑल में ऐड होगा वो नीड के हिसाब से. P0 P1 P0 P1 दिस इज P0 P1. हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें R1 में एक ऐड होगा, इसमें 0 होगा, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 1, इसमें. सही लिखा या गलत लिखा? सर अवेलेबल एंड अवेलेबल क्या हो जाएगा? अवेलेबल बिकम 0 and 1. सही है? ऐसा नो? इसमें से एक बचा है. नाउ इज इट इन सेफ? यस सर. यस, इट इज इन सेफ. वेरी नाइस. बिकॉज इट इज इन सेफ. क्योंकि इसको मिल जाएगा 0 1, इससे कम है तो 1 0 ऐड हो जाएगा. तो कितना हो गया? 1 1 हो गया. फिर 1 1 इससे कम है तो दोनों एग्जीक्यूट हो पाएंगे. मींस P1 कैन बी एलोकेटेड विथ R1. सो P1 कैसे एलोकेटेड करेगा? वो बोलता है कि पहले देखिए कि आप रिक्वेस्ट कीजिए. यस, फर्स्ट टू कन्वर्ट दिस क्लेमेट्स टू द रिक्वेस्टेड्स. कब कन्वर्ट कर पाओगे? दिस रिक्वेस्ट क्लेमेट्स, दिस क्लेमेट्स कैन बी कन्वर्टेड टू रिक्वेस्ट provided the eligibility criteria match. Provided the eligibility criteria match. Criteria satisfied. Is it satisfying the eligibility criteria? आप लोग बोले तो सर हो रहा है, eligibility criteria satisfy कर रहा है. मतलब वो क्या किया? पहले इसको क्लेम से रिक्वेस्ट बना दिया. फिर देखा, फिर इट इज चेकिंग दैट क्लेम से रिक्वेस्ट बना दिया. फिर ही इज चेकिंग दैट whether it can be allocated or not allocated. Because since it is in SEP, it can be allocated. Since it can be allocated, तो क्या करेगा अभी? So now he can make a changes. This requested again
will be converted to assigned edge. Yes, so क्या हुआ, ये वाला पार्ट अभी now it is changed to थोड़ा सेव कर देता हूँ, एक मिनट. हाँ, so this particular edge now it is changed to this. Yes, अभी क्या साइकिल है, साइकिल नहीं है. यस, सो फास्ट वर्क हो गया. सो फास्ट वर्क क्या क्या मिला, इन लोग को ऐसे मिल गया. अभी क्या डिमांड किया, बोल रहा हूं. नेक्स्ट P0, तो पहले क्या किया, P0 मांगा था, ओ P1 मांगा था. सो P1 में थोड़ा गलत हम लिख लिए, क्या करना चाहिए बोल दीजिए, तो थोड़ा बोल दीजिए. P1 को मिला है. P1 को मतलब A होगा 0, A होगा 1, A 1 1, इसको मिला है, इसको मिला है. दिस इज 1 एंड दिस इज 0, दिस इज allocation 0, allocation 0, दिस इज 1 1, दिस इज 0 एंड 1. ओके, अभी तक यहाँ है, ए रूल है. देन नेक्स्ट क्या मांगो, देन ही इज asking दिस P0 is asking for, P0 is asking, P0 is asking for R1 resource. सेम आप दे पाओगे कि नहीं. सो क्या क्या चेक करोगे, चेक पहले करोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कैन योर P0 विल बी allocated with R1. आप अगर देखोगे R1 P0 is allocated with ए, नीड से कम है, नीड से कम है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है. सो इसलिए क्या किया, पहले he has just changed this claim edge to the request edge यहाँ पर, because he is finding the need से कम है, उसका जितना चाहिए था उससे कम है, लेकिन ये अवेलेबिलिटी नहीं है. अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, only he has made a request for this. रिक्वेस्ट क्या मतलब, claim has changed to request, but वो रिक्वेस्ट असाइन कन्वर्ट नहीं हुआ. क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ, because he is this availability is not matched, because he is demanding for one resource, but that one resource is not currently available. So it is become this. Now please look into it. Suppose next step is again P0 is asking for R2. आप दोगे कि नहीं. P0 is asking for R2. So देखते हैं ये हो पाता कि. So P0 is asking for R2. So क्या क्या होना चाहिए, P0 R2 को मांगा, देखेंगे P0 is asking for R2, ए भी है एंड ए भी है. तो क्या करना चाहिए उसको, वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि मैं उसको चेंज कर दूं रिक्वेस्ट को, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है. रिक्वेस्ट को चेंज कर दिया. आफ्टर चेंजिंग दिस थिंग्स, ही इज नाउ चेकिंग दैट whether this can be allocated if it is in self. देखिए कैसे होता है, if P0 is requesting for R2, so क्या हुआ, 1 1 1 1, then P0 is requesting for R2, R2 A है, so 0 and 1, and this will be, need will be 1 and 0, this will be 1 0, this will be 0 1, and availability कितना हो जाएगा, चेक कीजिए availability, इसमें 1 कम हो गया, मतलब 0 0. Yes or no? If you can look into it, this is our max, this is our request, this is our allocation, and this is our need, and this is our P0, and this is become P1. So in this way, what is changing? Now this availability becomes 0 0. With this availability, can it will be satisfy a safe state or unsafe state? Whether it will be satisfy the safe state or unsafe state, बोलिए. 1 0 1 0 कभी भी इसमें allocate नहीं हो पाएगा, means it is unsafe. Since it is becoming unsafe, this request cannot be granted. समझ पा रहे हो? This request cannot be granted at this scenario. Here the request is granted, but I don't have this particular availability. But in this case, what? I change the claim to request, but after request I cannot come to the assignment. But now think, check in a different way. Suppose A नहीं मांग रहा है, इसका जैसा था वैसे है. Yes, and he is asking for this request. Can you allocate or not allocate? देखिए, suppose instead of this fellow, now your demand is P1
is asking for R2 resource. आप दोगे कि नहीं दोगे? P1 is asking for R2 resource. आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? थोड़ा सोचिए. P1 is requesting for R2 resource. इसको देख के बोलिए तो R2 एक मांग रहा है, P1 का R2 नीड एक है, अवेलेबिलिटी एक है, तो क्या करेगा वो? ऑटोमेटिकली इस रिक्वेस्ट को असाइन कर देगा, सॉरी क्लेम को रिक्वेस्ट चेंज कर देगा. Once the claim becomes changed to the request, then we'll check the safe state. Now is it safe? Let's see the scenario. So क्या क्या डाटा आएगा देखिए. मैक्स था, allocation था, need था and available था. So what are the changes comes? This is become 1-1. Sorry, this is 1-1. This is 1-1. This is 0-0 1 and 1. कुछ भी allocate नहीं हुआ है. And ये बोलिए ए अभी सेकंड वाला मांग रहा है. सेकंड वाला अगर मांगता है तो ए 0-0 हो जाएगा, ए 1-1 हो जाएगा एंड दिस इज बिकम 0-0. इज इट सेफ और अनसेफ? नाउ इज इट सेफ और अनसेफ? क्विक. 0-0 इससे कम है तो 1-1 इसको अलोकेट होगा, फिर 1-1 ये ऐड हो गया अलोकेशन, देन इट इज बिकम 1-1, देन दिस 1-1 इज लेस देन इक्वल टू दिस, मींस इसको भी होता है. मींस P1 to R2 can be allocated, whereas so P1 to R2 कैसे allocate होगा देखिए. Now this requested will be changed to assignments. Assignments. So if it is become, again I'll explain. Don't worry. Assignments. अभी अगर assignments करता हूँ, is it making a cycle? No cycle. But previous scenario आप देखिए, दो चीज देखिए. पहले क्या था? A है P0, A है P1. R1 किसको allocate हुआ था? Previously allocated to him, means he is assigned with this. Then he has made a request. Now R1 and R2. Now R2 is claimed. How they are claiming? Like this. How he is claiming? Like this. Claiming. Now if P0 is requesting for R2, आप नहीं दे पाओगे. क्यों नहीं दे पाओगे? रूल बोलता है कि this claim is you change to the requested and this requested you change it to the assigned. अगर मैं assigning कर देता हूं, it is become a cycle. Since it is become a cycle, you don't have to allocate. क्यों allocate फिर से नहीं किया? फिर से बोल रहा हूं. When a request is coming, first you check that वो resource खाली है कि नहीं. अगर resource खाली है, आप उसको temporarily assign कीजिए. Temporarily assign करके देखिए, is there any cycle exist or not? If there is a cycle, don't allocate this. इसको allocate मत कीजिए. क्यों ऐसे नहीं हो पाया? देखिए इसको एक रिसोर्स मिल गया है. If I am giving the second resource, it will be better. Why? P1 will be get both the resources and will release so that he will get it. But in this scenario, what happened? R1 P1 को मिल गया है and R2 अगर P0 को मिल जाएगा, वो डेडलॉक सिचुएशन आ जाएंगे. So what is again saying? Previously, our repeatedly saying, if you have doubt, please ask me. Previously, it was a claim, means further they will make a request. Suppose he is making a request, whether you will assign or not. I cannot assign him because if I will if I will assign these things, means my direction will be going to be changed like this. If I change this direction, then this is become a loop. देखिए, A इसको एक loop बन गया. But other scenario देखिए. If it is R1 and if it is P0, if it is P2, P1 and this is become R2. So R2 and this is R1. पहले क्या था? A इसको assign हुआ था, A इसको request किया था, A इसका claim था, A इसका भी claim था. Now what? If P1 is requesting for R2, कैसे मिल रहा है देखिए. R2 खाली है, मतलब request हो गया. Assign करेंगे, अगर assign करेंगे डायरेक्शन चेंज कर देंगे. If I change the direction, whether it will make a cycle? No cycle. Means this can be allocated. समझ पा रहे? तो क्या बोल रहा है वो? First you design the normal graph with the claim and request. So कैसे करेंगे? जितना आपका नीड होगा, वो आपका सब क्लेम में रहेगा. सोच लीजिए, हाँ, वो क्लेम में रहेगा. फिर जो असाइन होगा, then directly assign होगा. Then when somebody is making a request, you have to do two steps. So I am telling. So first, when process PI
makes a request for RI, then what you are going to change? First you check, it must have a claim edge. There must be, first criteria is क्या? There must be a claim edge. होना चाहिए. अगर claim edge नहीं है मतलब क्या है? उसका need ही नहीं था. How can you give it? If there is a claim edge, then you convert this claim to request. Convert this claim edge to request. Request में change किए. फिर देखें, is it available? If this is available, then assign कीजिए. If the resource is available, resource is available, then temporarily convert the request edge to assign edge. And verify there exists a cycle or not. ऐसा ना, आप इसको पहले क्लेम था, क्लेम को रिक्वेस्ट चेंज किए, फिर देखे कि R2 खाली है तो असाइन कर दिए. Once you find that it is assigned, then आपका ये इस तरफ हो गया, ऐसे ऐसे हो गया. If it is bigger, now you check whether it is in cycle or not, and you are finding there is no cycle, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर ये डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये फिर से यहाँ आ गया, means there is no cycle. So from this, what you can find, if there is no cycle, then assign, else revert back to the original state. Back to original state. समझ पा रहे हो किस केस में हुआ था? इस केस में से हुआ था. Because if P0 is requesting for R2, अगर R2 claim को request change किया, फिर request will be changed to assigning, then देखा कि ये एक cycle बन रहा है. If it is become one cycle, then I can. समझ में आया? So this is about a Sir, allocation. बोलिए. हाँ. sir, how that P1 to R1 claim turn to request, sir? Claim? Claim. You can also revert back to this also, because in this previous case, very nice. In the previous case, initially nothing was there. Yes. Now one resource gets allocated to whom? P1. Now P0 made a request. When P0 is making a request, is there any issue comes with respect to cycle? No, sir. No. So that's why वो क्या किया है? इसको रिक्वेस्ट डाल दिया है, क्लेम को रिक्वेस्ट कर दिया. मतलब वो रिक्वेस्ट करके वेट कर रहा है, फिर से और रिक्वेस्ट नहीं करेगा. मतलब he has already made a request for him. जब भी वो फ्री हो जाएगा उसको मिलेगा. It means that he has already made a request. Whenever this will become free, he can take it, provided there will be no cycle. That's why in the example we can take it is a request. But if somebody will say, no, sir, don't do like this, you make again revert back to the claim edge. That is also accepted. Okay. Suppose आप claim किए, claim में देखे कि ये मिल सकता है. क्यों मिल सकता है? क्योंकि R1 इसका नीड है, P0 का नीड R1 एक कम है, बट यहां पर अवेलेबल नहीं. Since it is not available, there is no question of checking whether there is a cycle or not. Only you give a requested claim to requested. समझ में आया? और फिर से बताओ. Yes, sir. मतलब दोनों चलेगा. दोनों चलेगा यहां पर. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये अवेलेबल है, क्योंकि यहां पर अवेलेबल R1 नहीं था, R1 has accept is assigned to the P1.
अगर यहाँ पर R2 जैसे अवेलेबल है, उस मोमेंट में अगर कोई रिक्वेस्ट डालता है, then you have to change the claim to request, request to assigning, verifies the cycle. If cycle exists, again revert back to the claim. Okay, again you revert back to the claim. Otherwise, huh? Sir, means that during a claim age, Huh? we first check for the request age, and it is temporary. And if we check for the cycle, and if we get true, it नहीं, means रिक्वेस्ट में साइकिल नहीं चेक करें, रिक्वेस्ट में ठीक है साइकिल नहीं चेक करें, रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट के बाद असाइन करके साइकिल चेक करें। ओके सर। क्योंकि क्यों नहीं चेक करेंगे आप, वो भी बोलना चाहिए सर रिक्वेस्ट में चेक क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्या बोल देने से हो जाएगा? आप मुझे ऐसे पूछेंगे आप क्या बोल रहे हैं रिक्वेस्ट में क्यों नहीं होगा, तो बोलना चाहिए क्योंकि उसका अपोजिट डायरेक्शन यूज हो रहा। हाँ नहीं, वो चेक करेंगे। क्लेम का जो डायरेक्शन है रिक्वेस्ट का भी वही डायरेक्शन है। अगर पहले से ही क्लेम में साइकिल नहीं था, रिक्वेस्ट करने पर क्या साइकिल हो जाएगा? नहीं होगा ना, इसलिए कर सकते। समझ पाए ना? है कि नहीं? क्योंकि ओनली यू आर डिस्कसिंग व्हाट इज द डिस्टिंग्विशन बिटवीन दिस एंड दिस। ही हैज previously he demanded for this, that's why I granted this request, but I have not given allocate the resource. I have accepted this request, but I have not allocated the resource. Then when we should not we should make the request edge to a claim edge? Again the request edge to the claim edge in this scenario, क्योंकि आप रिक्वेस्ट दिए थे, इस रिक्वेस्ट का कुछ मायना नहीं है। क्यों मायना नहीं है बोलिए? आप रिक्वेस्ट किए थे, आप रिक्वेस्ट किए, फिर देखे कि ये अवेलेबिलिटी है, फिर भी आपको रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा है। ओके, समझ पा रहे ना? एक क्लेम था, एक पहले क्लेम था यहाँ पर, इफ यू कैन लुक इनटू इट, यहाँ पर क्लेम था, दिस इज ए क्लेम, एक क्लेम था, क्लेम को आप रिक्वेस्ट में चेंज किए, रिक्वेस्ट को आप असाइन में भी चेंज किए, देखे कि क्यों असाइन में चेंज किए, क्योंकि ये अवेलेबल था, अवेलेबल होके भी आपको नहीं मिल रहा है, मतलब अभी क्लेम सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं? अभी आपका क्लेम भी सेटिस्फाई नहीं है, आप जो क्लेम कर रहे हो वो भी आपको नहीं मिल रहा है। बट प्रीवियस केस में क्या हुआ था, आप अगर थोड़ा सा इंटरलिंक करेंगे, प्रीवियस केस में इसको ये मिला था बिकॉज R1 हैज असाइन्ड टू P1, but when P0 is requesting for R1, R1 ही नहीं था, it was not at all available. So what is the question of next? So one can also say that no sir, don't change this to request, make it to claim again. Yes, no problem, nothing wrong in that. Sir, so if sir, after making a request edge, then we have to check for the resource whether it is Check for the available. resource. Yes. After Then changing it to if it is available, if the resource is available, then we are going to check for the that convert it to the means assigned edge temporarily, and then check for the cycle. Perfect. Okay. Cycle. Yes, this is called like this. But एक क्यों डिटेल बुलाया? जब हम मल्टीपल के लिए अभी काम करेंगे, आप बोलोगे सर हम लोग सीख गए, कुछ नहीं चाहिए, अब मत बताइए। अभी सीखे क्या क्या बताया? सो क्लेम कब असाइन को चेंज होगा? When somebody is requesting, then first you have to check that क्लेम है कि नहीं। क्लेम मतलब क्या है? आप बोलिए बैंक लोन के हिसाब से क्लेम क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, असाइन क्या है? बैंक लोन के हिसाब से yes, can you answer here? What is, as per the bank loan example is concerned, what is the claim, what is the request and what is the assign? नहीं तो आप बस यहां रट के हाँ बोल के जा रहे हैं। क्लेम क्या है, तुरंत बोलिए सर। नीड ऑफ मनी सर। नीड ऑफ मनी, not need of money. The bank manager, how much money he has sanctioned for your loan. सपोज आप 1000 रुपया का लोन मांगे थे, बैंक वाला आपको 500 रुपया का सैंक्शन किया, मतलब होल टोटल आपको 500 मिलेगा। सो दैट इज योर इनिशियल क्लेम। आप 500 ही मैक्सिमम आप क्लेम कर पाओगे।
समझ पा रहे हो? अभी आपको 200 रुपया ऑलरेडी बैंक दे दिया है, सो व्हाट इज योर न्यू क्लेम? 300 और नॉट? समझ पा रहे हो? आपको इनिशियली आप बैंक लोन के लिए अप्लाई किए थे, यू हैव अप्लाइड फॉर द बैंक लोन फॉर 500 रुपीज and let's take the 500 rupees has sanctioned, means bank has a sanction. जैसे आप स्टडी लोन लाते हैं ना, तो कैसे करते हैं? आप बोलते हैं कि 4 years के लिए आई नीड 16 लाख, बैंक सैंक्शन कर दिया, सपोज बोला कि 10 लाख में लोन दूंगा, then 10 lakh at the very beginning, at the first semester's beginning, your claim is 10 lakhs. After the end of the first semester, you took 2 lakhs rupees from bank. Then what will happen? Now your next claim should be maximum how much? 8 lakhs. So that is the claim. But out of the 8 lakhs, in the second year, you apply for another 3 lakhs. So now the 3 lakhs become a request. Now the 3 lakhs become a request. And out of this 3 lakhs request, the bank may give you or may not give you. Then when it will give you, then your 3 lakh is less than your 8 lakh. Claim था 8 lakh, आप अभी मांग रहे हो 3 lakhs. मतलब that claim can be converted to request. Are you getting my point? That claim can be converted to request. But बैंक के पास अभी 3 लाख है कि नहीं? Suppose है. Then what will happening? That request is now temporarily converted to assigning. Then he checking. If that temporarily assign edge, if it is created and there is a cycle, then bank फिर से revert back करके आपको claim में ही रख देगा. आप फिर से वो 8 लाख बाद में claim करोगे. अभी बैंक के पास नहीं है, नहीं देने के लिए वो बोल रहा है. Yes, so that is your claim, request and assign. Claim मतलब आप बाद में कितना और पाने के लिए request कर पाओगे. Request मतलब now you have made a request for these many resources. Yes, and assign मतलब आपको assign इतना हो गया, आपको उतना लोन मिल गया, पैसा मिल गया, लोन नहीं, पैसा मिल गया. Got it? Or doubt in this? You have to ask, otherwise no meaning. मैं explain कर दे रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए. सर हाँ सर, बट आपके एग्जांपल में हाँ रिक्वेस्ट करने के बाद वो चेक कर रहा है एलिजिबिलिटी का, बट नो नो क्लेम के बाद चेक करेगा ना सर वो एलिजिबिलिटी. आपको अगर सोचिए there is R2, R3 also है, and initially suppose सोचिए R3 has claimed by P1, but P0 has not claimed to R3. Can a P0 make a request for R3? No sir, first it has to make a claim. Yes. Since he has not claimed, not make a claim. Since he has not make a claim earlier, there is no question of request. Because at the very beginning, everybody has to be say that how many resources I need. Since he has not previously told I need a R3 resources, he cannot make a request for R3 at any moment. That's why the claim is very, very important. यहाँ पर क्लेम आप लोग ही बोले थे ना सर, क्लेम यहाँ पर है मैक्स, क्लेम यहाँ पर है मैक्स एज पर आवर एग्जांपल. भाई दिस मेनी अमाउंट हैज अ सैंक्शन बाय योर बैंक एंड कोई भी एक अमाउंट अभी तक बैंक मुझे नहीं दिया है, देन टोटल क्लेम स्टिल आई हैव टू मेक 1 month. सर क्लेम नीड होगा ना सर? वही ना, आपका इनिशियल स्टेज में क्लेम क्या है, इज इक्विवेलेंट टू मैक्स है कि नहीं, वही तो बोल रहा हूं. एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन एक भी अमाउंट नहीं मिला है, उस टाइम पे आपका नीड इज इक्वल टू मैक्स और नॉट? यस सर. मींस दैट मोमेंट योर नीड इज ए क्लेम, मैक्स इज आल्सो क्लेम एट द वेरी बिगिनिंग. बट द मोमेंट one resource gets allocated to him, then what is your claim? For him the claim is 1-1, for him the claim will be 0-1. Correct sir, or not? Sir, but sir here sir, sir we are making a claim when we have a need. Yes sir. No. Hey, that is it. When you will make a claim when there is a need. You are saying like this, no?
It is Yes, not sir. like that. It is not like that here. He is saying you are eligible for claiming this many. You are eligible for claiming this much amount. Sir, but that we will do after when we are changing the claim to request, na sir? No 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 satisfy नहीं हुआ, मैं satisfy नहीं हुआ. मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग पहले से मांगे थे कि मुझे एक एक चाहिए रिसोर्स, ठीक है ना. सपोज सोच लीजिए 11 रुपया चाहिए, आप बोले थे 11 रुपया आपका बैंक अभी सैंक्शन कर दिया है, मतलब इन द फ्यूचर यू कैन क्लेम फॉर दिस 11 रुपीज इन द फ्यूचर. देन व्हाट इज योर टोटल क्लेम? 1 or not? Yes, sir. यस. एंड उस 1 में से इसको एक अलोकेट हो गया है, देन फर्दर वो 1 क्लेम करेगा या 0 क्लेम करेगा? 0 एंड रिक्वेस्ट जो होगा, अब बोलिए, द रिक्वेस्ट इनडायरेक्टली शुड बी लेस देन इक्वल टू क्लेम और नॉट. मींस दिस रिक्वेस्ट इज नथिंग बट लेस देन इक्वल टू नीड. करेक्ट है कि नहीं? Because you told only this need becomes your claim. At the very beginning, this is your claim and this is also the claim. But the moment few things will be allocated, then this is only the claim. This is not now the proper claim. Because among this total thing, few things are already allocated. जितना बचा है वो होगा आपका फ्यूचर क्लेम. नहीं सेटिस्फाइड? सर हाँ सर इसको ऐसा देख सकते हैं ना कि हाँ. यहाँ मैं पे क्यों तीन चाहता हूं, नंबर- देखिए मैं 2 मिनट में इसको क्रॉस करके जा रहा हूं. मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि तीनों चीज क्या है, इसलिए मैं 10 मिनट तक इसको ऐसे डिस्कस करता हूँ. प्लीज बोलिए. सर प्रोसेस P0 और P1 है, और लेट्स से R1 R2 R3 are resources. हाँ P0 wants in the max column 1 1 0 means R1 is 1, R2 is 1 and R3 is 0. Sir, so here the claim edges will be P0 to P1 R1, P0 to R2 and no edge for P0 to R3. Correct. Because it does very not mean. perfect. Because he does not require that R3 at all. सर तो उसके बाद हम लोग सिर्फ वो क्लेम एज के लिए कैसे वो रिक्वेस्ट बनाएंगे जब उसका वांट इज लेस देन पेंडिंग, लेस देन नीड. हाँ नो, टाइम टू टाइम उसका क्लेम भी चेंज हो रहा है ना. अभी देखिए अगर इसको ये रिसोर्स अलोकेट हो गया है, फिर से क्या P1 क्लेम कर सकता है? लेकिन पहले से तो P1 का क्लेम वो था ना, लेकिन अभी क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज दिस क्लेम हैज ऑलरेडी सैंक्शन टू हिम. If it is already sanctioned, can your P1 again make a claim for R1? नहीं ना. तो क्या चेंज हुआ फिर? आपका क्लेम जो इनिशियली मैक्स था, मैक्स में से कुछ अलोकेट हो गया है, जो बचा है वो है नीड, एंड दैट नीड बिकम्स योर न्यू क्लेम और नॉट? यस सर, जो भी पेंडिंग में रहेगा. पेंडिंग में रहेगा कि नहीं? समझ पाए या स्टिल डाउट? somebody else? Please don't feel bored. This is a request. You have to understand that what is these 3 things. समझ में आया? फिर बैंक अमाउंट का बस देख लीजिए, आपको और कुछ नहीं समझना पड़ेगा. Now we will do the multiple instances. 5 मिनट अभी भी है, थोड़ा एक आइडिया ले लेंगे कि मल्टीपल इंस्टेंसेस कैसे काम करता है. सेम स्टाइल, बट इट इज नेम्ड एज ए बैंकर्स एल्गोरिथम. बैंकर्स एल्गोरिथम पहले हम सीखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम लिखेंगे. यस. सो व्हाट इज सेइंग, कॉपिंग फ्रॉम द बुक ओनली द क्वेश्चंस. सो देयर आर 5 प्रोसेसेस, दैट इज P0, P1, P2, P3, P4. ऑल प्लीज पार्टिसिपेट. एक क्वेश्चन आता है, हाँ ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा मैक्स है. बोला है कि 3 टाइप का रिसोर्स है, A, B टाइप, C टाइप. 3 टाइप का, जैसे R1 R2 था, यहां पर A B C 3 टाइप का है. लेकिन इसका डिमांड कितना है? ये चाहता है कि 7 ऑफ A एंड 5 ऑफ B एंड 3 ऑफ C. समझ पा रहे हो? 7 नंबर ऑफ A रिसोर्स चाहिए, 5 नंबर ऑफ B रिसोर्स चाहिए
3 number of C resource size. Similarly, he has given what? 3, 2, 2. He has given 9, 0, 2. He has given 2, 2, 2. And this is coming 4, 3, 3. This is my max. समझ पाए? Then बोला है कि allocation इतना हुआ है. Allocation कितना? इसको allocate हुआ है 0, 1, 0. इसको allocate हुआ है 3, 0, 2. इसको allocate हुआ है सॉरी allocate हुआ है 2, 0, 0 बोला है. 2, 0 and 0. हाँ ठीक है ना? 2, 0, 0. सॉरी. Then उसको allocate हुआ है 3, 0, 2. इसको allocate हुआ है 2, 1, 1. इसको allocate हुआ है 0, 2, 2. फिर दिया है कि available कितना है. So available इसको दिया है AVL is 332. तुरंत बोल पाओगे कितना टोटल रिसोर्सेस सिस्टम के पास है? Total number of resources present in the system, not available. Present in the system. Available total number of allocation. Very nice. The total allocation plus availability is the total number of resources. है कि नहीं? मतलब 0 2 ए है 4 3 7 7 प्लस 3 10. ए है 2 1 3 1 4 4 3 7. सही लिख रहा हूं? 2 1 3 2 5 5 2 7. ठीक है? This is the number of resource style or not? Because A टाइप का इतना allocate हुआ है, इतना बचा है. B टाइप का इतना allocate हुआ है, इतना बचा है. C टाइप का इतना allocate हुआ है, इतना बचा है. अभी बोल रहा है whether it is in safe or not. कैसे करेंगे? हमारा क्या क्या चाहिए? पहले देखेंगे सेफ, फिर देखेंगे कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट उसका allocate करेंगे कि नहीं. तुरंत बोल दीजिए कैसे करेंगे हम लोग? सेफ स्टेट फाइंड आउट करेंगे. क्या चाहिए? और एक वेरिएबल नीड. Very nice. Can anybody tell me, other student, what is the need of this? Tell me. 7. No, 7 6 0. Correct नहीं? 7 minus 0 7. 5 minus 1 5 minus 1 4 and 0. ठीक है? इसका बोल दीजिए तुरंत 1 2 2. सर 3 होगा ना सर? ये 3 minus 2. 3 minus 2 1 है ना? फर्स्ट वाला सर नीड में वाला. फर्स्ट वाला कितना हुआ बोले तो 3. 3. थैंक यू. थैंक यू. ठीक है? तो ए बोल दीजिए 6 0 0. गलत लिख रहा हूं तो बोल दीजिएगा. ये होगा 0 1 1. ये होगा हाउ मच इट इज? 4 1 1. 4 1 1. ठीक है? Everybody is okay with this data? Now tell me whether it will be safe or not. If it is safe, what is the sequence? कौन एग्जीक्यूट हो पाएगा? कोई बोल पाओगे पहले? What is the rule? आप देखोगे क्या? कौन सर P1 P3 P1 हो पाएगा या P3? Anyone is possible. हाँ? ऐसे भी पूछ सकते हैं. All safe sequence आप दिखाओ, वो भी पूछ सकते हैं. Yes? Then P1 पहले जाएगा. So if the P1 will become, then what is the approach? 1 2 2 is less than this. Then P1 allocate हुआ तो क्या ऐड होगा? बोलिए. What is the rule? If this much will be given, then how much will be allocated? 2 0 0. 2 0 0 plus है कि नहीं? Available plus allocation पढ़े थे कि नहीं? Then it will be 5 3 2. किसको allocate होगा अभी? फिर 5 3 2. Can it be allocated? No. Can it be allocated? No. Can it be allocated? S. सब P1 हुआ था, अभी P3 आएगा. सब P3 को दे देते हैं. P3. So P3 का कितना ऐड होगा? 2 1 1. सही लिखा? So this is become 7 4 3. ये भी हो गया. फिर नेक्स्ट कौन होगा? 7 4 3 हो पाएगा. आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो. There is no way. Tell me what is this 7 4 3? क्या होगा फिर? P4. 7 5 3 हो जाएगा उसके बाद. हाँ 7 4 3. So 7 4 3 का ए वाला अगर करता हूं P0, then it will come as a 0 1 0. Then comes as a 7 5 3. इसका भी हो गया. फिर कौन जाएगा? ए भी हो पाएगा. Then P2. P2 will be, if P2 will be given, then it is 3 0 2. So this is 5, this is 5, this is 10. Then P2 भी हो गया. फिर इसका करूंगा तो 0
0 to 2 में कितना हुआ 10 को 10 5 to 7 7 सही आया कि नहीं वेरीफाई कर लो ए सेम होना चाहिए अगर सेम आ रहा है मतलब इट इज इन सब सीक्वेंस सही किया कि नहीं आर यू गेटिंग दिस अंडरस्टूड करेंटली इट इज इन सेफ और नॉट इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ ए बैंकर्स एल्गोरिथम यस अभी आप रिक्वेस्ट को रिसीव करोगे या नहीं रिसीव करोगे इस सिनेरियो में रिसीव सर करेंगे सर सेव सीक्वेंस में सब है क्या दिया है और 2 मिनट बस रुकोगे 2 मिनट हाँ क्वेश्चन में दिया है कि P1 बंदा रिक्वेस्ट किया है 042 के लिए ओके P1 बंदा रिक्वेस्ट किया है 042 दे पाओगे या नहीं दे पाओगे P1 बंदा रिक्वेस्ट किया है 042 के लिए कर पाओगे या नहीं कर पाओगे सर नहीं हो पाएगा सर ग्रांट नहीं होगा क्यों नहीं हो पाएगा अवेलेबल क्योंकि कम है मैक्स Available से ज्यादा आ गया उसका नीड भी उतना नहीं है हाँ देखिए सर नीड कितना है 1 2 2 ए तो नीड हो जाएगा ए सेटिस्फाई करता है ए चाहता है कि बी रिसोर्स चार्ट हो चाहिए इसके पास कितना मिलना चाहिए 2 हियर ओनली इट इज डिससैटिस्फाइड और नॉट आर यू गेटिंग हम लोग स्टूडेंट लोग क्या गलत करते हैं पता है ना इसको सोच लेते हैं कि 122 मत सोचिए सोचिए कि 1 2 2 लेकिन ये मांगा है कितना 042 कौन सा नहीं मिल पाएगा इसको 0 तो उससे कम है ठीक है 2 भी तो 2 से कम है ठीक है लेकिन ये मांग रहा है 4 मिलना चाहिए 2 सही है या गलत है गलत समझ पाए इसका नीड कितना था 122 बट मांग रहा है कितना 042 सो 042 इसमें फिट हो पाएगा नहीं पाएगा लेकिन स्टूडेंट लोग क्या करते हैं सर ये 122 है ये तो 42 मांग रहा है हो पाएगा वो मत कीजिएगा ठीक है ना यस now this is the way to do it now what is he saying he is asking for now he has changed this P1 is asking for 102 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा P1 is asking for 102 बंद कर दूंगा आप 1 मिनट में P1 is asking for 102 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अभी लैब है से सर लैब है सर वी कैन गो फॉरवर्ड ओके ओ 1 मिनट का और लगेगा सॉरी आई पुट 1 मिनट लाइक दिस हाँ 102 यहाँ हो पाएगा या नहीं पाएगा यस सर हो पाएगा आगे जाएगा उसके बाद अगर हो पाएगा टेल मी व्हाट Request. चेंजेस क्या करोगे कैन यू इमीडिएटली अलोकेट और कुछ देखोगे सर रिक्वेस्ट है उसके बाद चेक होगा क्या क्या चेक करोगे वांट बैंक से ठीक है। अवेलेबल दिस P1's request should be less than need सर है this P1's request should be less than availability सर वो भी है मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा फिर क्या करेंगे टेम्पररी मॉडिफिकेशन वेरी नाइस टेम्पररी मॉडिफिकेशन थोड़ा आप लोग को इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं तो बोल पाओगे तुरंत हाँ अभी बोलिए हमारा P0 कितना होगा मैक्स लिख देता हूं अलोकेशन लिख देता हूं यहाँ नीड लिख देता हूं एंड अवेलेबल लिख देता हूं तो कहां पर चेंज होगा P0 का जैसा था वैसा रहेगा सो 7 5 3 थोड़ा बोल दीजिए 0 1 0 7 4 3 ये देखेंगे फिर P1 का बोलिए P1 का क्या क्या चेंज होगा what will be going to be changed can your max is going to be changed no नो सर अगर इतना अलोकेट हो गया ये बढ़ जाएगा कितना होगा 3 0 2 सही लिखा नीड कितना हो जाएगा नीड कितना हो जाएगा 0 बोलिए 0 2 0 ये समझ पाए सब लोग क्यों इतना हुआ 122 माइनस 102 सो कितना आया 1 से 1 0 गया 2 से 2 2 आया 2 से 2 0 आया okay that's why 02 anything will be changed in the availability कितना हो जाएगा कितना था 3 3 2 था अभी कितना घट गया इसको कितना मिल गया 102 सो कितना बचा है 2 3 0 सही लिखा ठीक है ना 2 2
2 2 0 हो गया, Yes, sir. फिर ठीक है ना, हाँ ओके। देन अदर सब सेम है, सो P2 का भी लिख लेते हैं। P2 का हमारा कितना है 902 302 600। फिर P3 का बोलिए, P3 का हमारा 222 211 011। फिर बोलिए P4 का 433 022। इतना कि नहीं, ये कितना 41। यस, अभी देखिए इज इट इन सेल्फ और अनसेल्फ, चेक कीजिए थोड़ा, कौन पहले एग्जीक्यूट हो पाएगा इस डाटा में, P1 P1। सो P1 को पहले देते थे, आर कितना होगा 302। 302 सो 2 आया, 3 आया, 5 आया। फिर बोलिए 532, ये नहीं हो पाएगा, ए हो पाएगा। सो P2 P3 कितना बचेगा फिर 211। सो कितना हो गया 7 4, कितना 7 4 3, ए भी हो गया। फिर ए भी हो पाएगा शायद कि नहीं, Yes, sir. P4 भी हो पाएगा, सो P4 कर देते हैं। सो 022, सो दिस इज बिकम 7 6 5। तो ए भी हो पाएगा, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। देन दिस इज 0 1 0, सो कम्स एज 7 7 5। This is also coming, then it is become 3 0 0 2, so this is 10 7 7, means this request can be allocated properly. This is called as banker circle, that's all. लेकिन नेक्स्ट क्लास लिखेंगे कैसे एल्गोरिदम लिखेंगे पूरा, but approach is this exactly same as the first example or not? Yes or no? Yes, only the data is given in this multiple resources, otherwise same thing. एक बार इस क्लास को एक बार रिव्यू कर दीजिए, सो नेक्स्ट क्लास हम सही तरह से इस बेसिस So that recording links. आज ही मिलेगा तुरंत। हाँ Okay. ओके, आई एम एंडिंग नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।